Hi guys, welcome back to class of learning. You are with Rahul Sharma, your friend and guide. In this class, all about the poetry Crusoe'S journal. So, इस poetry में हमें क्या पढ़ना है and what was the work done by Sir Derek Walcott in this particular poetry. Poetry को समझना important है and why it's really important to grab the test of the poetry. बहुत इम्पोर्टेंट था कि आप उस समझ पाए. सर टेस्ट डेफिनेटली इज नॉट पॉसिबल टू राइट नाउ एवरीथिंग ऑन अ बोर्ड. तो मैंने क्या किया, मैंने उस टेस्ट को यहाँ पे अपने हाथ में ले लिया ताकि मैं आपके लिए डिसाइड करूंगा, आप लोग सुन लेंगे. Then we're going to have the certain conclusion. For the basic analysis, you guys can copy this. इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप समझ पाए. तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर इस पोएट्री का बेसिक जो ओरिजिनेशन था उसका रीजन क्या था. रीजन था that this poem is a response to the novel Robinson Crusoe written by Daniel, which was written as an autobiography. I repeat, as an autobiography with an underlying message that one could create the British system of the rule anywhere in the world. So I'm not going to tell you about the story of Robinson Crusoe here, लेकिन हाँ उसके कॉन्सेप्ट को समझना है. ये उसका रिप्लाई sort of response जिसको हम क्लियर करते हैं. And then here I'm going to recite this poetry for you guys. Like those plain iron tools he saves from the shipwreck. Guys, please अगर आपके पास टेस्ट हो तो बेटर हो, नहीं तो प्लीज सुन के इसको लिख लेंगे ताकि आप लोग इस टेस्ट को क्लियर कर पाएं. कि पेपर में टेस्ट होगा इसको आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. Like those plain iron tools he saves from the shipwreck, having a pose on oars as a row wood to the ends. Out of such timber come out first book. I repeat, out of such timbers come out first book are profound genius whose Adam speaks that prose which, blessing some sea rock, blessing some sea rocks, started itself the poetry surprise in a green word, one without metaphors. Like sea hustlers, he bears in a speech, manic as misery, the word two savages. The word two savages. In term, अगर मैं आपको explain करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे it's all about the survival of man. And when we do read the poetry from the Derek Walcott, तो हमें पता है वहां पे वो सर्वाइवल की बात करता है, वो कैरेबियन पोएट्री की बात करता है. He been talking about the certain phase or the problem that was being faced by the people of Caribbean territory. उसको हाईलाइट किया. सर एम्पिरिज्म उसकी हर पोएट्री में कहने हेल्प करता है. आप वो तो रेसिज्म उसका पार्ट है जिसको कभी अवॉइड नहीं करता. कहता है हाउ टफ द लाइफ वाज फॉर द पीपल दो लिविंग इन दैट पर्टिकुलर आइलैंड्स. उनकी लाइफ एंड हाउ दे ओवरकम. That was the message. And then here we are having water-bearing vessels whose sprinkled alters us into Good Friday, who recite his praise, parroting our master's style and voice. We make his language ours. Converted cannibals will learn with him to eat the flesh of beast. Direct. यहाँ पे सारी चीजें हमें क्लियर होती. तो आई होप इसके बाद आप टेस्ट को क्लियर कर लेंगे. बट अब आता है टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ पोएट्री, उसको समझना जरूरी है. तो हमें अगर क्वेश्चन आता तो हम उसमें क्या लिखने वाले हैं. सो सर द क्रूजर जर्नल इट इज अ मेडिटेशन ऑन पोएटिक एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन नीडेड टू सरप्राइज अगेंस्ट द कॉम्प्लिकेटेड कैरिबियन एक्सपीरियंस ऑफ सिविलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन. सर कॉलोनाइजेशन व्हेन somebody was being ruled by someone, in other words the powerful people those rule over the weaker section of societies. As we already know that Africa and Asia were the colonies for these Britishers, तो उसको हाईलाइट किया गया. What was the life? As you must go through by the names. आपने लास्ट वीडियोस देखी थी, नेम्स की पोएट्री थी जहां डायरेक्ट वॉलकॉट का ही एग्जांपल है. उसने उसमें क्या डिफाइन किया? The life of the poor people, the slavery. And then the figure of the curse is compared with the mythical figure of the Porteous, who was not only learns how to adopt the changing circumstances but also how to make up now poetic symbol by which he understand the world. It's not about how you cope up, it's all about how you deal with the certain circumstances and come with the perfection. And then the last phase we are having, the figure of Crusoe is both individualistic and communal. So individualistic का concept तो clear हो गया, but why is communal? Because he is communal because he represents the Caribbean people. So define करते हैं Caribbean people क्या हैं, कैसे जीते हैं लाइफ को, क्या सर्कमस्टेंसेस को हाईलाइट किया गया. तो यहाँ पे जब आप पोएट्री का टेस्ट पढ़ते हैं यू आर गोइंग टू ग्रैब एवरीथिंग एट अ वन स्टॉक. आई होप इस वीडियो ने आपको पोएट्री को समझने थोड़ी सी हेल्प की होगी.
Don't forget to like, share and subscribe. Catch you guys soon with a new video. Bye guys.